So beta, we were talking about our food. So our food, it consists of various nutrients. The energy is given by everybody here. Everybody sit straight, concentrate on the screen. So carbohydrates and fats gives us energy. Proteins make different structures of our body. And there are trace nutrients also. Trace nutrients means the nutrients required in small amount. Right. So we come to Oscar Paryal. Paryal is there in Oscar? Yes, who will tell me? Raise your hands. Name the elements, name the nutrients which are required in small amount. Raise your hands. Which are Padam Vibhushan? Padam Bhushan, the boy in the green shirt. I'll speak again, question. I'm telling. Name the nutrients which are required in small amount. Padam Bhushan. Yes? Vitamin and minerals. Yes, vitamins and minerals. What are the functions? Tell me. Same student, tell me the function of these nutrients. For example, one main function. Ma'am, Hmm. ma'am, body. Yes. Body. एक फंक्शन दोनों का कॉमन एक फंक्शन हम एक जैसे नॉर्मल फंक्शन कह देते हैं द vitamins and minerals helps us in protecting from various diseases. बैठो बेटा. So minor nutrients, micronutrients, vitamins and minerals are called as protective foods. Why they are called as protective foods? Because they protect us from various diseases. It means noble students, sit straight. बेटा ऐसे नहीं. Sit straight. Yes, सूर्य चक्र में बेटा थोड़ा सा कैमरा कंट्रोल दो. Give me camera control. Thank you. So we were talking about micronutrients, trace nutrients, vitamins and minerals. So let's see about vitamins, right? There was a movie, शायद मैंने आपको दिखाई भी थी. There was a movie, बोल रहा था बोल, in which Kader Khan, as the sun sets, as the dark comes, Kader Khan is unable to see the things clearly. Why? Can anybody tell me why Kader Khan could not see the things clearly in dark? Paramveer Chakra, the first boy. हाँ जी, माइक ऑन करो. मैक्से से में भी बेटा मिडल रो में जो सेकंड बेंच पे दो गर्ल्स है वो भी आ जाओ. हाँ जी, परमवीर चक्र बोलिए बेटा. Deficiency of vitamin A. Yes, due to deficiency of vitamin A. बिल्कुल ठीक है. आप बैठो बेटा. Very good. The night blindness, the disease is due to deficiency of vitamin A. Everybody here. सबने इधर बाकी सब छोड़ दो. वर्कशीट छोड़ दो, कॉपी छोड़ दो, पेन छोड़ दो. सिर्फ mind, ears and eyes on the screen. Coordinate the three things. Your mind, your ears and your eyes. Coordinate these three things. बाकी अपनी बॉडी को रेस्ट दो. इधर उधर बाजुएं इधर उधर करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? वो वहां पर एनर्जी जाएगी. So due to the deficiency of vitamin A, there occurs the disease night blindness. How vitamin A is required for vision? Yeah, why? Yeah, what is the function of vitamin A for our vision? Vision में हम क्यों नहीं देख पाते रात को vitamin A की deficiency से? Yes, Max say the girl. Yes, third bench, the girl who has raised her hand. Come towards window. आ जाओ. विंडो की तरफ जो थर्ड बेंच पे गर्ल है आ जाओ.
How vitamin A is helpful in our vision? हाँ जी बेटा. Required for, हाँ. Required for vision, that is absolutely correct. But how? ठीक है? I think you don't know. बैठो, मैं अभी ये बताती हूँ बेटा कि what happens. ध्यान से देखना है. उनको भी करने ध्यान से देखो, everybody here. Eye has rods. ध्यान से, आई के अंदर एक सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉड्स. रॉड्स हैज पिगमेंट which which receive dim light. अगर कोई चीज हम लेंगे ही नहीं तो उसका क्या काम है? And second point, everybody write down this point. Vitamin A is required for synthesis of pigment in eye. आई में जो पिगमेंट है उसको बनाने के लिए विटामिन ए चाहिए. इफ, ध्यान से पहले इधर देखो फिर लिखना. इफ नो विटामिन ए, नो पिगमेंट, देन रॉड्स विल नॉट टेक लाइट, डिम लाइट. जो ब्राइट लाइट है दिन में वो तो ले लेगी, बट डिम लाइट ले ही नहीं पाएगी. और जब डिम लाइट हमारी आई में एंटर ही नहीं करेगी, हाउ कैन वी सी ड्यूरिंग डार्क, ड्यूरिंग डिम लाइट? सो राइट ऑन दिस. And how to get vitamin A? Carrot juice, pomegranate juice, green leafy vegetables, and cod liver oil. Cod is a type of fish. फिश के लिवर से एक ऑयल बनता है, cod liver oil, rich source of vitamin A. Right? That's why your grandparents, your parents, they tell that have carrot juice during winters, because carrots are more commonly occur during winter. So they always see. आप कहते हो हमें माजा पीना है, हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, हमें रियल का जूस पीना है. No, have fresh carrot juice for your eyes. Right? Then another thing. Nowadays, how many students can run for 15 minutes without having any pain in the legs? Raise your hands. For at least 15 minutes. How many of you can run? Truthfully बताना है, ऐसे नहीं. सबने. नोबल, हाँ जी, कितने बच्चे भाग सकते हैं? अपने हाथ खड़े करो. यस, अच्छा, अब हैंड्स डाउन. और कितने बच्चे हैं जो कहते हैं हम थोड़ा सा तो भाग लेते हैं, बट नॉट फॉर 15 मिनट्स? आर देयर एनी स्टूडेंट्स हु कैन नॉट? You are young students, है ना? But some students don't, right? Hands down. So why students cannot run? Because आपकी मैं नहीं बात कर रही हूँ. You may not run due to some other reason, but many people, young children, young people of 25 years of age, they cannot run properly because their bones are weak. Why their bones are weak? Yes. Name the disease caused due to cause in which the bones are weak. Yes. Who will tell me the disease in which bones are weak? Surya Chakra. Surya Chakra, yes, towards
यू नो वहां पीछे वॉल के पास एक बॉय, वो डोर के पास एक बॉय है लास्ट में. यस, लास्ट बेंच. कम, भाग करो, भाग कर. स्विच ऑन द माइक. कम क्लोज टू माइक. स्विच ऑन द माइक. नेम द डिजीज इन विच बोन्स बिकम वीक. इट इज रिकेट्स. हाँ जी, अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि रिकेट्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिकेट्स? हु विल टेल? हु विल टेल? हाँ बताइए. They have weak bonds of them. टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. Why vitamin D? बैठो बैठो बैठो. Why vitamin D is generally deficient nowadays? बेटा हमारे पेरेंट्स का जब टाइम होता था ना, हमने कभी नहीं सुना कि इनको विटामिन डी की कमी है, इनकी बोन्स में दर्द है. बट हमारे है. हम अपने टेस्ट कराने जाएं तो हमारे में विटामिन डी की कमी होती है. वाई नाउअडेज? पहले लोगों को विटामिन कहाँ से मिलता था जो हमें नहीं मिलता? बिकॉज दोज पीपल यूज्ड टू वॉक इन सन, राइट? वट वी डू? पापा गर्मी बहुत है, कार निकाल लो, हमने कार में जाना है ना. मम्मी भी कहते हैं नहीं नहीं भी कार में लेके जाओ, एसी चलाओ, है ना. ऐसा ही होता है. यस और नो? बिकॉज इट्स टू हॉट आउटसाइड, बिकॉज सन इज वेरी ब्राइट, है ना. आजकल पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ये हो गया है कि हमारे बच्चे काले ना हो जाएं, है ना. धूप में मत ज्यादा घूमो, काले हो जाओगे. बट दिस इज ए मिसनोमर. काले तो चलो थोड़े से हो जाओगे, बट योर बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग इफ यू वॉक फॉर एन आवर इन सनलाइट. ठीक है, आपने देखा होगा कि लड़कियां या लड़के, है ना, स्कूटर्स पे जाते हैं धूप में तो उन्होंने बड़े बड़े ग्लव्स डाले होते हैं, मुंह ढका होता है, हेलमेट डाला होता है. यस और नो? देखा है ना ये चीज. देयर स्किन इज नॉट एक्सपोज टू सन. मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू पीपल, या आपसे, नॉट आप, अभी तो आप छोटे हो, 11th 12th में बच्चे हो जाते हैं. व्हाट दे डू जनरली? जो बच्चे ड्रॉप करते हैं या कुछ है, दे read, they study during night time and sleep during daytime. They don't know when the sun rises, when the sun sets. Many people who have night shifts, they sleep during daytime, rise during night time. They are not exposed to sun. So if one is not exposed to sun, there occurs deficiency of vitamin D. And deficiency of vitamin D causes rickets. तो rickets में क्या होता है बेटा? So what is, हमने एक नाइट ब्लाइंडनेस की थी कि पर्सन हु इज नाइट ब्लाइंड, जो नॉर्मल है आप जैसे बच्चे, वो उनको रात को ये कारें क्लियरली नजर आएंगी. बट इफ कादर खान कम्स फ्रॉम बोल राधा बोल मूवी, देन he can see only some bright, lights of the car. He cannot see the car clearly. This is night blind. So yes, this is, you know, bent bones become, this is rickets, right? Rickets, you told me that this is due to deficiency of vitamin D. Why? Lack of sunlight exposure. Now my question is, does the sunlight consist of vitamin D? Yes. From Noble. Noble, does the sunlight consist of vitamin D? Raise your hands if you know. क्या sunlight के पास vitamin D है? Yes, there is, I think, one student. I think fifth bench towards wall. जो अकेला बैठा बच्चा, गर्ल्स के पीछे, वॉल की तरफ. हाँ जी, you come. Tell me. माइक ऑन करो. हाँ जी. Yes. Does the sunlight जो आ रही है, क्या उसके अंदर विटामिन डी है? Yes.
Yes? Okay. Any different answer? Any different answer from Noble? Everybody thinks the sunlight has vitamin D? Who doesn't agree with this student of Noble? ऑस्कर, यस ऑस्कर में बच्चों को नहीं है. आप बैठो बेटा नोबल में. ऑस्कर में यस, फर्स्ट बेंच पे ही एक बच्चे का हाथ खड़ा है. कम नियर द माइक. Does the sunlight consist of vitamin D? बेटा माइक ऑन करो. Yes. आपने भी कहा yes. Anybody says no? Anybody who says Padam Shri? Yes, second girl. हाँ जी आ जाओ. She says no. तो फिर सनलाइट कैसे विटामिन डी देता है हमें? Nana said yes. No. What you say? Yes. No, beta. Sunshine does not have vitamin D. Sunlight. क्या है? इधर देखो. Everybody here. Noble, boys, first bench. क्या खेल रहे हो? May I talk to your teacher? So sunlight does not have vitamin D. Sunlight is taken by our skin and activate our liver to convert, ध्यान से, to convert cholesterol to vitamin D. So cholesterol, you know, fats, important for our body. कैसे? Because some of the cholesterol is changed into vitamin D. कैसे होता है? Sunlight हमारे liver को धक्का मारती है, stimulate करती है. The sunlight stimulates our liver. If we don't go to sunlight, cholesterol पड़ा हुआ है हमारी body में, but it will not get changed into vitamin D. Write down this. Everybody write down. सबने गलत आंसर दिया था. सनलाइट, रिमेंबर दैट. लिखना है यहाँ पे. सनलाइट does not consist of vitamin D, but sunlight is taken by our skin and activates our liver to convert cholesterol into vitamin D. Is it okay, everybody? ठीक है जी, आगे चले. So now, if we have vitamin D, our bones will be strong. No rickets. Then, one of my friend from the last few days has bleeding in the gums. When she brushes her teeth, she has bleeding. The blood comes from the gums. And the doctor advised her to drink lot of, lime water, lemon water, not lime water, lemon water. वो कहता बहुत सारा नींबू खाओ. ठीक है, take amla also, right? And he also prescribed her Limcy, a tablet called Limcy. ठीक है? What can be the reason for this prescription? Why the bleeding occurs in the mouth? What is the disease called as? Yes, who will tell me? PZ. Yes, student from PZ, 6 PZ. I think Pulitzer. Hanji, can you hear me PZ? Pulitzer, can you hear me? Raise your hands, अपने हाथ खड़े करो जल्दी से. हाँ, मैम किसी बच्चे को भेजिए.
If Manraj is there, Manraj PZ. हाँ बेटा, देखिए आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी बोलिए। टेल मी, जो ब्लीडिंग इन गम्स है, व्हाट इज द डिजीज कॉल्ड एज? आ जाओ एमी, आ जाओ, बता जल्दी। आ जाओ, कम कम कम। कम बता यहाँ पे आगे हो जा, आगे द डिजीज इज कॉल्ड एज, नैप की आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही, जोर से। इट इज कर्वी, वेरी गुड वेरी गुड। सो due to the disease is called as curvy, and it is due to deficiency of vitamin C. You know, there is a story behind vitamin C. Anyone knows the story of sailors? शिप के बारे में पता है आपको? शिप और उसके जो बीच में सेलर्स थे, तो a long way back, about I think 200 years, I don't know exactly, a long way back, what happened that people were going through a ship on a long voyage. कई महीने उन्हें लग गए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हुए. But what they observed that their teeth started bleeding and slowly the people died. But somehow they reached an island where they bought, एक बीच में एक आइलैंड आया, वहां से उन्होंने नींबू संतरे ये खरीद लिए. उनको नहीं पता था विटामिन सी के बारे में. एंड दे ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड ईटिंग लेमन्स, दे स्टार्टेड ईटिंग ऑरेंजेस, ठीक है, देन नो पर्सन डेवलप्ड ब्लीडिंग इन टीथ एंड दे देन सेड there is something in oranges, in lemon, which prevent bleeding of teeth. इस तरह से पता चला था कि एक शिप जा रहा था, बहुत कई महीने बाद उन्होंने दूसरी जगह पहुंचना था, बट लोगों के बीच में ब्लीडिंग शुरू हो गई दांतों से, ठीक है, और धीरे धीरे लोग कमजोर हो गए और फिर मरने भी शुरू हो गए क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हो रही थी, इम्यूनिटी कम हो रही थी. So, what was the reason which was discovered later on that those people died due to scurvy? And what is scurvy? Deficiency of vitamin C. Symptom, main symptom, bleeding gums. तो gums की bleeding से ही मर गए? No. Function क्या है? That is builds immunity. हमारा immune system. बेटा कभी गला खराब हो आपका, वायरल प्रॉब्लम हो, इन वायरल डिजीजेस जनरली द थ्रोट प्रॉब्लम इज ड्यू टू वायरस, बैक्टीरिया से कम है, बट नो मेडिसिन वर्क्स फॉर वायरस, राइट? देन ड्रिंक द लेमन जूस विद हनी. थोड़ा सा गर्म करो पानी को, लेमन डालो. जनरली बच्चे क्या कहते हैं या कई बार पेरेंट्स भी कह देते हैं खट्टी चीजें मत खाओ, नींबू पानी मत पियो, बट नो, टेक लेमन वाटर, put some honey in it, drink it, it soothes your throat, it builds immunity, it helps in improving your health. Have lemon water daily. शिकंजवी पी लो रोज, बट ठंडे पानी में नहीं, ठीक है, बिकॉज लेमन वाटर improves immunity. Vitamin C improves immunity. Deficiency of vitamin C causes scurvy. And the first symptom which you can observe is bleeding gums. Is it okay? Chaliye. So then, sometimes, not at your age, but at my age, what happens sometimes that people, मतलब 35, 40, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई डिजीज हो गया बहुत भयंकर, नो, but there occur some problems in which the person starts forgetting. Alzheimer's की बात नहीं कर रही हूं मैं, थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है. Then pains in the body. What is the disease? What is the problem? There is some problem in the nervous system.
नॉट एट द यंग एज, बच्चों को नहीं जनरली, बट 25 to 35 ईयर्स की एज में बॉडी में पेन्स शुरू हो गई, मसल्स काम नहीं ढंग से कर रहे, कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें भूलनी शुरू हो गई है, एंड दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। जब दर्दें होती है ना तो जनरली डॉक्टर कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लो, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक, और वो हो भी जाती है, बिकॉज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन द नर्व्स, नर्व्स में प्रॉब्लम होती है तो हमारे मसल्स में प्रॉब्लम होती है, जिससे पेन्स होती है, और नर्व्स में प्रॉब्लम है तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाती, ठीक है। तो आपकी बुक में पेलेग्रा नाम दिया हुआ है विटामिन बी 1 का डिजीज, बेरी बेरी पेलेग्रा, बट राइट डाउन वन पॉइंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी में बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं, B1 B2 B3 B6 B12, मैनी, राइट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन, सब लिख लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी नर्वस सिस्टम, vitamin B complex is required. These are the nerves. For vitamin B complex is required for healthy nervous system. Deficiency of vitamin B complex, write down, deficiency of vitamin B complex causes muscular pain and mental confusions. इसको लिखो, अंडरलाइन करो बेटा, these things you might remember these for your exams के लिए ठीक है, but these are important for your daily life also. आपके आसपास आपकी आंटियां अंकल वो कहें कि भी हाय हमारे मसल्स में पेन है, तो tell them take vitamin B complex capsules, right? ठीक है, so this is about vitamins. Then vitamin A, B, C, D, E for the skin, K for the sex organs, है ना, 4 vitamins important. Then tell me, this female, she is suffering, she lives in Himachal and suffers from swollen neck, and the disease is called as, yes, कौन बताएगा? ऑस्कर में बहुत सारे बच्चों का हाथ खड़ा है, ऑस्कर कम कम कम, somebody कम, जो आता है देखिए कौन भाग के पहले आता है, देख, लड़ना नहीं, आ जाओ बस, बाकी सब बैठो, माइक ऑन करो बेटा, जल्दी से, इंग्लिश की क्लास भी है, जल्दी से, हाँ। मैम गोइटर। गोइटर, अब जाना नहीं है, जाना नहीं है, मैंने आपसे पूछनी है 2 चीजें, दिस गोइटर, हाँ जी, कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी है बेटा, विच मिनरल इज डेफिशिएंट? आयोडीन। आयोडीन। यहाँ नेक में एक स्ट्रक्चर है अंदर, इसके अंदर जो है एक स्ट्रक्चर है विच रिक्वायर्स आयोडीन, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? इट इज आयोडीन इज रिक्वायर्ड, लिख लो एवरीबडी, required by thyroid gland, everybody notes down, iodine is required by thyroid gland, which forms thyroxine hormone, ये आपकी बुक में शायद ना हो तो लिख लेना, which forms thyroxine hormone. Everybody note down,
आयोडीन किस लिए चाहिए? नेक में थायराइड ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। ओके, एंड द लास्ट थिंग you will tell me, this is, you know, a female, she is walking but उसको सांस चढ़ रहा है, breathlessness, she or he wants that they should sleep all of the time, they don't have the energy to do work, they went to a doctor, the doctor said that see your hands are pale, उसको कहा कि अपने हाथ देखो, मेरे हाथ देखो ऐसे हैं, आपके हाथ ऐसे है पीले पीले से, आंखें देखो येलो हो रही है, so which mineral is deficient in her or in him? Tell me. सूर्य चक्र बेटा, yes, किस तरफ से करेंगे? yes, some girl comes from सूर्य चक्र, किसी लड़की को आता है, हाथ पीले हुए हुए है ना? yes, the first boy, आ जाओ first boy, आओ। मैम आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से यहाँ पे दिख रहा है, सो दिस इज द डिजीज इज कॉल्ड एनीमिया। सिम्टम्स क्या है? येलो स्किन, ब्रेथलेसनेस, वीकनेस। व्हाई? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। देन व्हाई? आयरन क्या कर रहा है? यहाँ पे यू कैन सी हियर, हियर मोर रेड ब्लड सेल्स आर देयर, हियर लेस रेड ब्लड सेल्स आर देयर। ये देखिए थोड़े हैं रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे कितने सारे हैं। सो आयरन required for formation of HB. HB is hemoglobin in RBCs, red blood cells. So next time I will tell you the function of hemoglobin, क्या करता है ये हम बात करेंगे, ठीक है? I hope you can do the assignment now. ठीक है, हमने ये चीजें रिवाइज की है, अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके आना, और कुछ डाउट्स हो तो you can ask me next time. Right? Give me 2 minutes to prepare for your English class. Relax in that time. Take out your English worksheets. अपने इंग्लिश की आज वर्कशीट्स मिली होंगी, वो निकालो और हम मुझे 2 मिनट दो।